हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्रीराम एडुटॉक्स में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड साथ ही साथ हम इस लॉ को प्रूव भी करने वाले हैं इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। So law of conservation of energy states that energy in this universe always remains constant. That means it can neither be created nor be destroyed, and as such the total energy in this universe always remains the same. Right. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। सो आप देखें यहां जो ये हमने फिगर बनाई है, इस केस में हम एक बॉडी कंसिडर करने वाले हैं ऑफ मास m, जो कि प्लेस्ड है एट पॉइंट A विच इज एट ए हाइट ऑफ h यूनिट above the ground. So A to B is h units, और चूंकि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है इसलिए इट्स वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। ऑल्सो मैंने एक पॉइंट लिया है C समवेयर इन बिटवीन A एंड B, और यहाँ पे मैंने इस फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी कंसिडर कर ली है v1। ऑल्सो at B I have considered the velocity of the falling body which is not entirely on the ground but has just reached the ground. So velocity at B आप ले लेंगे suppose v। also A to C हमने लेट किया है डिस्टेंस s, और B to C जो हमारा डिस्टेंस रह जाता है वो रह जाता है टोटल h माइनस s, एंड फाइनली g हम लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों तीन केसेस हमें लेने हैं। केस वन विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट A, देन दो और केसेस लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C एंड फाइनली एट B। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट A। So we know potential energy here will be equal to m into g into the height at which the object is kept, mgh, and kinetic energy here is 0. Why? Because the object is at rest at point A. So mechanical energy at point, the total mechanical energy at point A becomes potential plus kinetic energy, which is mgh plus 0, that is mgh only. Okay, moving on, next case हम लेते हैं when the object has started falling and has reached some point C in between A and B. So here if we say the potential energy की बात करें तो potential energy at point C will be m into g into, ध्यान से C point पे the object is now at a height of h minus s above the ground. तो जब C पे है point ऑब्जेक्ट, तो उसकी हाइट अबव द ग्राउंड है h माइनस s, इसलिए एम जी एच की जगह हम लेंगे h माइनस एस। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे निकालने के लिए मुझे चाहिए C पॉइंट पे वेलोसिटी। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय third equation we have v square is equal to u square plus 2gh. Putting the value at C, final velocity is v1 square, initial velocity is 0, and 2 into g into h is going to be the distance which it has covered
starting from A till C. So distance is S. इसका मतलब हमारा V1 स्क्वायर आ जाता है 2GS। तो नाउ हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है हाफ इंटू m इंटू V1 स्क्वायर विच इज 2GS। अपॉन सिंप्लीफिकेशन हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है mgs। तो हेयर ऑल्सो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकालें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh माइनस s प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज mgs। इसको हम सिंप्लीफाई करें mgh माइनस mgs एंड प्लस mgs, ये हो गया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद टोटल मैकेनिकल एनर्जी एज mgh ओनली, like in the first case. Finally, case 3 will be when the body has just reached or it is about to reach the ground, about to hit the ground, it has not actually reached the ground. So at B हम बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। वो तो हमारी हो जाएगी जीरो, बिकॉज नाउ द बॉडी इज नॉट एट एनी हाइट अबव द ग्राउंड। सो mgh means m into g into h is 0, right? And kinetic energy is half into m into velocity at point p, जो कि मैंने लिया v, हाफ m v स्क्वायर। ये हमें फिर से फाइंड करना होगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v स्क्वायर here becomes u square, which is 0 again as it was starting from rest, plus 2 into g into h in case of point B। हम पूरा h ही लेने वाले हैं क्योंकि the body has covered from A to reaching B the entire distance h। तो इसलिए v square becomes 2gh only, and therefore kinetic energy becomes half into m into v square, which is half m into 2gh. 2 gets cancelled and we are left with mgh. So finally the mechanical energy at point B comes out to be potential energy, which is 0, plus kinetic energy, which is mgh, that is mgh only again. So आपने देखा बच्चों, तीनों ही केसेस में हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है mgh। This means that throughout the free fall the mechanical energy of the falling body was conserved, and this is what our law of conservation of energy states. एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, that during the free fall जब बॉडी पॉइंट ए पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी थी लीस्ट यानी कि 0। बट एज द बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग its potential energy goes on decreasing while the kinetic energy goes on increasing, right? So ये थी बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए उनका प्रूफ। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।